Hi. Extremely sorry, guys. I had a call, so I went to take on that. Okay. So let's start with the presentation. Then, in the last class, we discussed about fashion and how the industry operates and what are the key sectors and the historical overview. And then now how fashion and as an industry, how it thrives. Today we'll be discussing on the same, right? Now, one thing I want to make you understand that fashion is a very versatile sector, right? If you wherever you don't understand, please tell me that, ma'am, we couldn't understand, or ma'am, we need clarity on this particular context. So let me know, okay? Okay, ma'am. Yeah. So in the last class, I had given you a task to study about Zara. Hello, Yes, is ma'am. everyone listening? Yes. Yeah. So Ma'am. please respond yes, no. It has to be interactive. It cannot be just one sided. It has to be very, very interactive. Otherwise, then there is no point, taking this class, because otherwise I won't know that where what you have understood. Okay, Okay. ma'am. So in the last class, Tazakia very beautifully explained about how Zara operates, okay, and how does the supply chain work. Okay, she talked about the vertical integration. She talked about how they copy the designs and then they show it in the, they have a very quick just in time thing wherein their supply chain is very robust, right? They talked about all of this. She talked about all of this, which is how, and that is how Zara operates, right? Yes, ma'am. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yeah. So Tazakia, if you could just once again tell us, because everyone is online, so if everyone will get a chance to understand it one more time, if you could just repeat, what did you understand from the Zara's operations? Yeah, sure. Yeah. So basically, we discussed about the business model of Zara, how it operates, and the first thing that we discussed was vertical integration, wherein the everything is controlled by Zara itself. So they are not basically dependent on out sources. Even the cost reduction, we discussed about that. How do they reduce that cost? They basically whatever is created, the clothes, everything, the accessories, just in time policy पे वो believe करते हैं, and that is directly supplied to the store at that time. So no storage purpose thing is required for that. So cost reduction and zero advertisement, they believe in that, and they believe कि ज़्यादा ज़्यादा stores वो basically ये what do we say, I cannot construct it. So, ज़्यादा stores basically हो उनके compared to advertisement, money advertisement ना जाए, उसमें ना जाए और बाकी चीज़ों में चला जाए. And they believe, as you said, just in time JIT policy. तो टाइम इज द मेन फैक्टर देयर. सो बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही फास्ट सर्विस उनका रहता है, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन स्टोर हो उनका. सो that's the main factor of their business model, how it operates. These are the main factors actually. Very good, quite impressive, Tazkia. Thank you. Very well noted. Yeah. Now, Veena and Dharamveer, Rupa, Vinita. Okay. So, did all of you get a clarity what she was trying to convey? Yes, ma'am. Veena, you were there. Vinita, you were there in the last class. Yes, ma'am. Yeah. So, you also must have done your research. So, would you like to add something to what she said? मैम सेम ही है सब कुछ जो भी उन्होंने
एक्सप्लेन करा. So would you like to add something else, or is it just whatever she said was that's it? मैम एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो ज़ारा है वो मॉनिटर करती है ना, उनके वो 200 प्लस प्रोफेशनल बिठाते हैं ताकि वो अपनी सब चीज़ को मॉनिटर कर सके, और वो कस्टमर फीडबैक बहुत ऑन द स्पॉट देती है ताकि, और वो रिस्पॉन्स भी एकदम करती है अपने कस्टमर्स को. Okay, they have a you mean to add that that they have a good customer service, यस right? मैम. यस यस. Okay, yes. So Zara being a fast forward brand, uh, it believes in fast fashion. Okay, so whatever designs you see in a regular basis, you won't find it in Zara. Zara is very exclusive in its design. So the USP of the brand is that they have a very defined and a very beautiful collection every time you go visit their store. It is just from the ramp. It is not that कि ये कहीं से भी कुछ भी डिजाइन करके ले आए हैं. It is very much in fashion influencers, trend setters. Okay, fashion the one who adopts the fashion, early adopters. Okay, so they always prefer Zara over anything else. Okay, so there are parallel brands who also believe in fast fashion. There are other brands, okay, H&M, okay, other brands are also there who are fast fashion brands, but Zara is a pioneer of all of them. Okay. Now, do you know the term fashion which is called classic? What is classic? Do you understand what is classic fashion? Tell me yes, no, whatever it is. Just tell me so that I can explain. I'm here to explain. मे बी ट्रेडिशनल टाइप. Not exactly traditional. Traditional is known as ethnic. Okay. ओके So, मैम. yeah. So classic means something which has been there for a long period of time, for a prolonged period. Something like denim, okay, jeans that you wear. Okay, आज के डेट में भी लोग जीन्स पहनते हैं. ठीक है. For example, if I say, you must have seen your grandfather, or grandfathers wearing denims. Okay, I have seen my grandfather wearing denims, my father wearing denims, I wear denims, my next generation is also wearing denims. So चार generation उस चीज को कंटिन्यू कर रहा है. That means that particular style, okay, that particular fashion has been there for decades. Okay, it has been there for decades. Now it is appreciated by the older generation, by the younger generation, by middle-aged people, by everyone. Okay, denim is called a classic because it is appreciated by everyone, men, women, children, everyone. It's a comfort wear, right? Which is why it is called classic. Getting my point? Are you? यस मैम. Yes, ma'am. Yeah, so that is called classic. Okay, which has been there for a prolonged period of time, and it is appreciated by everyone. Okay, that is called classic. So when we see a classic design, okay, you won't see the classic changing its style in a very fast manner as in Zara does. Zara के जो कपड़े हैं, ओके, या फिर जो फास्ट फैशन है, जो आज है कल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, let me give you an example so that you could easily resonate. Now, neon colors आपको पता है? Neon colors, Yes, ma'am. right? You know neon colors. Should I show you? Does everyone know मैम what are शो कर दो. No, ma'am. okay?
Neon colors are something which is very, very flashy. Okay. See, let me share. Can you see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. These are neon colors. Okay, very flashy, very trendy. You know, एकदम वो आंख में एकदम फटाक से वो लगता है. Correct. This is neon. नियॉन को लेके बहुत फैशन स्टेटमेंट्स भी बने हैं. ओके, समथिंग विच इज वेरी फ्लैशी, वेरी आउटरेजियस. ओके, समथिंग लाइक दिस. कैन यू सी इट? Yes, ma'am. Ma'am. Yeah. So I'll show you one more thing. See, neon handbags, earrings, bikinis, right? Dresses, swimwear, shoes, glasses, everything, everything. Okay. So this is a fashion, okay, जो कि बहुत दिनों तक चला. ठीक है, बहुत दिनों तक चला मतलब एज ए फॉर अ पीरियड ऑफ 6-7 months और 1 year. ठीक है, एंड देन इट फेडेड आउट. इट फेडेड आउट. और ये जो फैशन है, ये आप कभी भी नहीं देखोगे कि ये आपके दादाजी या पापा अप्रिशिएट करेंगे. दिस इज समथिंग यू पीपल विल अप्रिशिएट, राइट? Yes, ma'am. This is not everyone's taste. Is this everyone's taste? No. 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 Right? So the formal understanding of this concept is, this is called fad. This is called fad fashion, which has a very short lifespan. Very short lifespan as compared to classic. Classic क्या है? जनरेशन टू जनरेशन वो फैशन कैरी हो रहा है. लेकिन ये क्या है? Not even a generation, not even for a year. This fashion is very short lived. Very, very short lived. Correct? This fashion is very much short lived. Ma'am, what is it called as? Fad. F-A-D. Fad. Okay, ready. This is called fad. Okay. तो फैड क्या है? क्योंकि आ रहा है मार्केट में, क्लिक हो रहा है, कुछ दिन तक चला, फिर वो मार्केट से आउट. आप देखोगे ही नहीं उस प्रोडक्ट को कभी भी. और अंडरस्टूड? लेकिन डेनिम के केस में क्या है? आप हमेशा देखोगे डेनिम होगा, हमेशा. स्टाइल वेरिएशंस, चेंजेस आएंगे. कभी स्लिम फिट, कभी मिड राइज, कभी बॉयफ्रेंड जीन्स, कभी कुछ, लेकिन डेनिम है. नियॉन कलर्स का क्या है? इनका बहुत कम शेल्फ लाइफ है. कुछ दिनों तक आएंगे, फिर चले जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So the very formal understanding of this fashion industry is that it is based on cycles. कि इस प्रोडक्ट का कितना लाइफ स्पैन हो सकता है. करेक्ट? आर यू गेटिंग मी? Yes, Yes. ma'am. इस प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, you must have generally seen in summer we tend to wear lighter clothes. We tend to wear lighter clothes because गर्मी है. we हम you know हल्का कपड़ा, कॉटन, लिनन, ये सब पहनते हैं. करेक्ट? We never use something which is heavy, something which is not breathable. We want something which is easy, which is airy, oversized, right? So that we feel that we, as if it is next to skin. Getting my point? हम कुछ ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि जिससे हमें लगता है कि ओके, दिस इज समथिंग जो कि अभी मतलब मुझे एकदम हल्का फील हो रहा है. आई फील एज इफ आई एम वेयरिंग समथिंग विच इज वेरी नेक्स्ट टू माई स्किन. गेटिंग मी और नॉट? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. लेकिन विंटर्स में वही चीज आपको अगर मैं दूं पहनने के लिए, विल यू अप्रिशिएट वेयरिंग समथिंग कॉटन, ब्रीथेबल, एरी इन विंटर्स? नो. No. No, ma'am. The demand is very different there. It demands sweatshirts, it demands cardigans,
it demands heavy clothes, it demands jackets, right, socks, right? तो Yes, सीजन ma'am. स्पेसिफिक भी हम लोग फैशन को डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिजाइन भी करते हैं, डिफाइन भी करते हैं, करेक्ट? समर में यू विल सी, आप स्टोर्स जाओ, ठीक है, आप आज अगर मौका मिले तो आप आज शाम में कहीं कोई मॉल में चले जाना, अभी तो नाउ इट इज पीक ऑफ समर, यू गो टू एनी स्टोर, आप कोई भी स्टोर जाओ, आप रैंडमली ऐसे जाके देखो उनका कलेक्शन, 2025 का स्प्रिंग समर कलेक्शन जाके देखो, बोलना कि आपके पास फ्रेश क्या आया है 2025 कलेक्शन में, आप देखना, जनरली, मेजरली लाइट कलर क्लोथ्स होंगे, लिनन्स होंगे, कॉटन्स होंगे, ठीक है, यू नो लाइटर ब्रीदेबल गारमेंट्स के कपड़े होंगे. Similarly, when you go in winter to buy something, okay, you will find the garments which are of really, really darker shades. Darker shades में होते हैं कपड़े, करेक्ट? Yes. हेवी होते हैं, निट्स होते हैं, मटेरियल चेंज होता है, निट होता है, ठीक है, जर्सीज होते हैं, राइट, कार्डिगन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर. सो सीजन वाइज कलर भी हमारा डिफाइंड है, मेजर कलर पैलेट. हम जानते हैं कि स्प्रिंग में हम लोग लाइटर कलर्स लेते हैं, विंटर्स में हम लोग डार्कर. Darker color. करेक्ट? अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो लाइकवाइज उस चीज को ध्यान में रखते हुए, ये मेजर है हमारा फैशन फोरकास्टिंग भी जब होता है, जब हम कलर प्रेडिक्ट करते हैं, कलर ऑफ द ईयर निकालते हैं, सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस फंडामेंटल्स कि हम ऑपरेट कैसे कर रहे हैं. तो फैशन इंडस्ट्री ऑपरेट इस तरीके से करता है कि उसका सीजन डिफाइंड रहता है कि स्प्रिंग समर ऑटम विंटर. तो हमेशा देखना, कोई भी ब्रांड ले लो, कुछ भी ले लो, वो अपना कलेक्शन अलग अलग रखता है. स्प्रिंग समर, ऑटम विंटर, ये फैशन में 4 सीजन्स होते हैं. स्प्रिंग समर को क्लब करके 6 महीना, ऑटम विंटर को क्लब करके रेस्ट 6 मंथ्स. So 12 months are divided into 6 and 6. Now the first 6 is considered as, you know, your spring summer and then autumn winter. Correct? Got it? Yes, ma'am. Likewise, the color palette is also defined. For spring, it is sober and very, very neutral and light colors are used, whereas in winter, darker shades are preferred. Okay, black, blues, okay, neutrals, these are preferred. Okay, Yes, ma'am. now keeping that in mind, आप कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो, कोई कुछ भी ले लो, ठीक है, ये इन चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं कि सीजन कौन सा है, उनका हमारा कलेक्शन कैसा बनेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से सोच के वो फिर डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, आपको बेसिक फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एक हो गई आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी उस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम डिजाइन करते हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करते हैं, फिर रिटेल स्टोर्स में आपको वो दिखता है. नाउ टू ऐड टू योर अंडरस्टैंडिंग, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग that fashion always works 1 year prior to the season launch. Okay, 1 year prior मतलब क्या? They start working for 2025. ये जो स्प्रिंग समर का कलेक्शन जब आप आज स्टोर में देखोगे ना, ये 2024 में डिजाइन फाइनल होके, मैन्युफैक्चर होके, ये ब्रांड्स के पास जाके पहुंच चुका होता है. They always work 1 year ahead of time. Please make a note of this. This is very important. आपको 2026 का कलेक्शन लॉन्च करने के लिए 2025 में पूरा काम करके रेडी करके 2026 मतलब स्प्रिंग समर 2026 तक पहुंचने के लिए
मैंने पहुंचाने के लिए 2025 में ही ये प्रोडक्ट सारे रेडी किए हुए रहते हैं. Which is why this fashion industry always focuses on trend forecasting. They do fashion forecasts. They study the fashion forecast, what would be the next upcoming thing, so that we could make that. डिजाइनर्स, ब्रांड्स, आप देखोगे कि हमेशा डिजाइनर्स और ब्रांड्स अपना कलेक्शन यू नो जस्ट स्प्रिंग समर से पहले ही वो अपना स्प्रिंग समर का लॉन्च करते हैं. ऑटम विंटर का होने से पहले ऑटम विंटर से पहले लॉन्च करते हैं कलेक्शन. आप नोटिस करना ये चीज, दिस आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स जब आपको इंडस्ट्री का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा. करेक्ट. तो दे ऑलवेज वर्क 1 year ahead of time. गॉट इट? समझ में आया सबको? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now, fashion industry operates through a complex network of interconnected sectors, each playing a crucial role in bringing clothing and accessories from concept to consumer. मैंने आपको उस दिन बताया था डिजाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस दैट दे फॉलो. मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, एंड देन marketing, branding, retailing and supply chain. Okay. Now, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 1 साल पहले काम करता है, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब क्या है, अगर हमारे 2025 में है, अभी हम 2026 का अगर कलेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो पहला क्या है, डिजाइन. डिजाइन आएगा कहाँ से? वी विल स्टडी द फोरकास्ट, वी विल स्टडी द पास्ट सेल्स डेटा. पास्ट सेल्स डेटा मतलब मान लो कोई ब्रांड है, सीके या कोई भी ब्रांड है, ठीक है, वो इतने सालों से अपना कपड़ा बेच रहा है, ठीक है. अब वो जो कपड़ा बेच रहा है उसका वो एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है कि मेरे कितने पीसेस क्या क्या गए, क्योंकि वो बहुत सारे पीसेस कलेक्शन बनाता है और अपने स्टोर में लगाता है. हर एक का डिजाइन अलग अलग होता है. वो देखता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा बिका है इस सीजन में. दैट मीन्स वो प्रोडक्ट ज्यादा बिका है, मतलब मार्केट रिस्पॉन्स उस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा अच्छा है. करेक्ट? आर यू फॉलोइंग मी? Yes, ma'am. तो वो मार्केट का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डिमांड में है, तो वो उस चीज का ध्यान रखता है. तो फिर वो नेक्स्ट सीजन में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो फिर उस डिजाइन को फिर से रीलॉन्च करता है, क्योंकि ही नोज दैट कि इस प्रोडक्ट का मार्केट रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया था. ठीक है? Okay, समझ ma'am. में? Yes, ma'am. तो फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज दे स्टडी द फोरकास्ट. पहले देखते हैं कि जो ट्रेंड फोरकास्टर्स होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं कि अच्छा द नेक्स्ट सीजन वुड हैव दिस कलर्स, द नेक्स्ट सीजन वुड हैव दिस पैटर्न्स, द नेक्स्ट सीजन विल हैव दिस काइंड ऑफ प्रिंट्स, द नेक्स्ट सीजन will have this kind of embellishments, the next season will have this silhouettes, okay, for men's, women's, kids, everyone. Okay. तो वो फोरकास्ट करते हैं फोरकास्टर्स. ठीक है. देयर आर लीडिंग एजेंसीज लाइक WGS एंड प्रोमोस्टिल. ओके. those people forecast. Okay, those people forecast. And then once they forecast, what they do is the designers take it into consideration. The designers then sits and decide that okay, my brand focuses on menswear. Okay, so forecast तो सबके लिए जेनेरिक उन्होंने फोरकास्ट कर दिया. अब मेरा ब्रांड कुछ अलग है, तो मैं अपने ब्रांड के हिसाब से ही ना प्रोडक्ट बनाऊंगी. मैं फोरकास्ट को तो 100% स्टडी करके गाइड मैप के हिसाब से नहीं कर सकती. So what I'll do is I'll take some inspiration from the forecast. I will understand some elements from the forecast. Okay, and then I'll take some inspiration. Okay, and then I'll make my own mood board. ठीक है. मैं अपना ओन मूड बोर्ड बनाऊंगी, खुद का मूड बोर्ड इंस्पिरेशन बना के लेके. बनाने के बाद देन आई विल अंडरस्टैंड कि ओके माय डिजाइन लैंग्वेज, मेरा ब्रांड का डिजाइन लैंग्वेज इज दिस. ओके. बेस्ड ऑन दैट
they will design the garments, be it print, be it anything. Okay, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so that is the thing. समझ में आया? Yes, ma'am. तो इन सब चीजों को बनाने के लिए तो वो जब इंस्पिरेशन लेते हैं तो किस तरीके से इंस्पिरेशन लेते हैं? तो डिजाइन में पढ़ो, एट द हार्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री इज द डिजाइन सेक्टर वेयर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स कंसीव एंड डेवलप क्लोथिंग, फुटवेयर, एक्सेसरीज एंड फैशन आइटम्स. Fashion designers draw inspiration from various sources including art, culture, history and trends and create sketches, prototypes and patterns for the new collection. समझ में आया आपको क्लियरली मैं जो आपको अभी समझा रही थी? Yes, ma'am. Now, once that is done, okay, once the designs are finalized for the upcoming season, okay, then the brand has to approve of those designs. Once they approve of those designs, once they approve of those designs, okay, what they do is the brand gives a go ahead. The brand gives a go ahead. Just a second, guys. Once they approve of the design, so the brand gives a go ahead. Okay, ठीक है, we like the designs, we are okay to launch this the collections in our website or in store. So now you start manufacturing, because manufacturing के लिए it takes lot of time. Okay, it takes lot of time क्योंकि उनको 5 पीस या 10 पीस नहीं निकालना, आपको एक स्टोर में 5 पीसेस दिखते हैं, करेक्ट, बट there are thousands and thousands of pieces there because there are innumerable stores. ठीक है, बहुत सारे स्टोर्स हैं और वो सारे स्टोर्स में वो कलेक्शन लॉन्च होता है. ठीक है, सारे स्टोर्स में कलेक्शन लॉन्च होगा तो डेफिनेटली मतलब उतने पीसेस भी चाहिए ना स्टोर्स में लगाने के लिए, करेक्ट. Yes, ma'am. तो इसीलिए हजारों के नंबर में या फिर लाखों के नंबर में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं. ठीक है, वंस ठीक है, उसके बाद फिर ओके, नाउ वंस दे डू दैट, उसके बाद फिर गारमेंट वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन होने के बाद फिर क्या होता है, देन मार्केटिंग और ब्रांडिंग. ठीक है, तो मार्केटिंग ब्रांडिंग रिटेल स्टोर्स जाने के बाद पहले क्या होता है, फिर डिजाइन अप्रूव हो गया. ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଢାକରେ ମାରିଥା, ସେପଟକୁ ନେଇଯା, ଟିକେ ଢାକରେ ମାରିକି ଆଣେ, ତାପରେ ଏଠି ପୋଛି ଦବୁ ହେଲା. हाँ, तो yes, so what they do is once the production is done, the brand gives a go ahead for the shipment. Okay, they give a go ahead for the shipment. That means that कि प्रोडक्शन को अब हमारे वेयर हाउस में भेज दो. तो वेयर हाउस में भेजने के बाद once they receive the product, okay, then the products are allocated to different stores. The products are allocated to different stores. उससे पहले क्या होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट को लेके प्रॉपर फोटोशूट्स वगैरह होते हैं जिससे कि ब्रांड मैसेजेस, ठीक है,
कलेक्शन का वो लॉग ये डिजाइन बुक बनता है, कैलेंडर बनता है, ठीक है, कोई मैसेज है, तो वो सब कुछ स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, तो इट कम्स विथ लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी. ओके, once you get a hype or get a buzz in the market कि okay this is coming, that is coming, then फिर क्या होता है, you go and look for the product. Once you search for the product, then the products are placed at the retail stores. It is placed in the storefront, so that you can go, you can check the product and then try it on and then buy it. Okay, try it on and buy it. So that's how the industry works. Now let me read it out for you. The marketing and branding sector is responsible for promoting fashion products to consumers and building brand awareness and loyalty. The sector encompasses advertising, public relations, social media, and other marketing channels used to communicate brand messages, showcase new collections, and engage with customers. Fashion brands invest heavily in marketing strategies to differentiate themselves in a competitive market and attract target audiences. Okay, now आपको आप एक ब्रांड के लिए आपको आप अच्छा आप लोग मुझे बताओ आपका फेवरेट ब्रांड्स क्या है. लेट्स स्टार्ट विद ताजिकिया. What are your favorite brands? Ma'am, mainly W, Biba, W, Biba. yeah, and in case of kids, it's Miarcus, Mother Care. Okay, and Yeah, that's it. okay, okay, okay. Okay, Vinita, can you tell me what are your favorite brands? मैम NNB, HNB, What? HNB H&B. May I know which? लोकल ही है. दूसरा गुची, H&M. हाँ, H&M. फेवरेट नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत सुना हुआ है. नहीं नहीं. हेलो. और कुछ विनीता? आप मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको पता क्या है, आपका फेवरेट क्या है? मैम फेवरेट तो नहीं है अभी तक. अच्छा, डू यू प्रेफर टेलर्ड मेड क्लोथ? यस मैम. ओके ओके ओके, ठीक है. ओके, धर्मवीर, कैन यू टेल अस व्हाट आर योर फेवरेट ब्रांड्स? मैम लिवाइस. यस, एंड एनी अदर ब्रांड? मैं कोटन से लिवाइस से मैम यही प्रेफर करती हूँ. रूपा? Ma'am, I have no any options. Sorry? I have no any options, ma'am. So you are not, you do not like any brand? No, no, no. Not pay for anything. Sorry? Not pay for anything. Not pay for anything as in? You don't pay, I mean, you only buy when you like it, right? Yes, yes, yes. That's for. Yeah. Yeah, but then what, do you like any brand? Have you shopped in any brand? No, ma'am. No, ma'am. Just like it and then I have to purchase. Sorry? Just like it in the shop and I have to purchase for that brand and no mention. Whatever you like in the store, you purchase it. So there is no, it Yes, is not yes. brand specific. No, That's no, 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 ma'am. No. if you're comfortable in Hindi also. Yes, यस ma'am. मैम. If you're comfortable in Hindi, then please talk in Hindi. It's not necessary that you have to talk in English. It's okay. Okay.
In whichever language you are comfortable, you can talk in that language, right? Hmm. Yeah. So coming to, so now you must have seen now, जैसे ताजकिया ने बताया कि she likes बीबा W. You must have seen जब आप बीबा या W के स्टोर में जाते हो तो you will see the girls wearing those garments and all. तो उनको वो अच्छा लगता है, right? वो फोटो शूट किया हुआ पोस्टर्स लगाते हैं, right? So these are a part of the promotional activities. Are you getting it? This is a part of the promotional activity. This is advertisement. This is advertisement. This is promotion only. Yes. Now, this is how the promotions are done. Now, the retail sector encompasses the distribution and sale of fashion products to consumers through various channels. Okay, through stores, through e-commerce, online, okay, department stores, boutiques. Now, wherever आज के डेट में तो आपको बीबा या फिर कोई भी ब्रांड, whichever brand that you like, you find it very easily. Either you shop online or you shop offline, right? You have two very very approachable media to shop in, that is online and offline, right? Yes, ma'am. Right. So you like it, you buy it, or else you return it, right? So it's a very hassle free process. It's a very very hassle free process. Now, because people have a lot of options to choose from, the brand always try to retain their customer. They always try to retain their customer, which is why they push in a lot of money in customer service. If the customer is satisfied with the brand, they will never leave the brand. इफ यू आर वेरी हैप्पी विद द ब्रांड, लेट्स से कि आपने कोई प्रोडक्ट लाया और वो बहुत दिन तक चला, उसका कलर ब्लीड नहीं हुआ, वो बहुत दिन तक चला, फटा नहीं, कलर नहीं छूटा, बहुत अच्छा, मतलब प्रोडक्ट मटेरियल भी वैसे का वैसे रहा, तो डेफिनेटली you will like that brand, you will try to shop more from that brand, isn't it? Yes, ma'am. That's a human perception. That's how humans are designed, right? So wherever if they like something, they do it, right? They go forth for it. So likewise, supply chain in a brand has to be very very thoughtful. Has to be very very thoughtful because it involves lot of things. It involves a lot of things, starting from the scratch to the product, the product reaching the customer's home. वहाँ कॉन्सेप्ट मतलब स्क्रैच से लेके प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचने तक, द एंटायर जर्नी is called supply chain management, is called supply chain. It involves overseeing of the flow of materials, मतलब raw material. यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही है. रॉ मटेरियल से, ठीक है, डिजाइन, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ होने के बाद, ठीक है, so from sourcing of raw materials to delivering the finished goods to the consumers, okay, that is the entire process is called supply chain. And this sector, what it encompasses logistics, sourcing, procurement, inventory and distribution, right? With a focus on optimizing efficiency and reducing cost and ensuring timely delivery of products. मान लो आपका प्रोडक्ट 6 महीने, मतलब आपने ऑर्डर किया प्रोडक्ट, ठीक है, ऑनलाइन. अगर वो प्रोडक्ट आपको 4-5 दिन में नहीं मिला, आपको मिलते मिलते 1 महीना लग गया, so will you be happy? No, definitely not, because you are expecting a product to reach to you as early as possible. If they would delay it, you may change your mind. So the big brands always ensure that the product reaches you in the minimum time, right? Yes, the ma'am. the brands expect that we should give our best to satisfy a customer because they think that consumer is the king. Because
we are paying them money. Consumer is the king. So whatever we like it, we pick it, and we are paying it. We are paying a price for that. We are not getting it for free. So which is because we are paying a price for it. So they listen to us. They try to satisfy us. जैसे कि मान लो आपको कहीं नौकरी लगनी है, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि आपका बॉस आपसे सेटिस्फाइड रहे, या फिर आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, आप क्या चाहोगे कि आपका बॉस आपसे खुश रहे, सो दैट कि आपका नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट अच्छे से हो, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन हो, राइट? एवरीवन वांट्स दैट. Yes, ma'am. So these are the perks which comes with it. These are the perks that comes with it. Okay. Now, how does this happen? How does the system work? This is a flow chart wherein you can see. Okay. Now, it starts with plan. Can you see that? Yes, ma'am. Yeah. So it starts with plan. So what does it does? It analyze the historic performance. जैसे मैंने आपको कहा कि वो past sales data को देखता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, correct? समझने के बाद what they do? They respond to current customer trends. वो देखते हैं कि आज के डेट में कंज्यूमर का मूड कैसा है. They ensure that the customer should be happy with our product. So they try to understand the consumer behavior, consumer mindset. Understood? Yes, ma'am. They design a product, ideation on potential concepts, leverage tools for collaboration. जैसे आप देखोगे ब्रांड्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, राइट? जैसे नाइकी ने जॉर्डन के साथ कोलैबोरेट किया, माइकल जॉर्डन के साथ, राइट? वो एक पब्लिक फिगर है और वो अपना सिग्नेचर स्टाइल निकाला, तो कोलैबोरेशन से जो लोग माइकल जॉर्डन के फैन थे वो लोग भी नाइकी से शूज लेने लगे, right? That's how you collaborate, that's how you expand your brand, okay? And that's how you design a product for a mass, okay? Develop and collaborate on components, ensure calendar timelines and met. तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसा तो नहीं है कि सालों साल लगाएंगे मैन्युफैक्चर करते, हैव अ टाइमलाइन कि आपको 2 महीने में आपको पूरा सैम्पलिंग रेडी करके आपको हमें भेजना है, तो बायर एक टाइमलाइन देता है. फिर उसके बाद क्या होता है, सोर्स करते हैं वो, उनके पास तो एग्जिस्टिंग मटेरियल नहीं होता क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, तो व्हाट दे डू इज दे आइडेंटिफाई द बेस्ट वेंडर्स कि वो कहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह सोर्स कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन व्हाट डू दे रिलाई ऑन? कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस एंड वेरिएशंस. वो देखते हैं कि सबसे कम पैसा कौन चार्ज कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली दे फाइनलाइज विद द बेस्ट वेंडर्स. ओके, once all of this is done, then they produce, then it goes for production. Okay, they ensure the readiness of the prototype, and then the manufacture this, then they start with the manufacturing, then they start with the manufacturing. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Then what they do is they deliver, identify selling market geographies. They identify selling in which geographical locations they are going to set. Okay, they are setting the geographical locations. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो दिल्ली का जो फैशन सेंस है, या फिर दिल्ली में लोगों का जो स्टाइल है, जो अटायर है, द वे दे कैरी देमसेल्व्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साउथ ऑफ इंडिया.
The north of India is very versatile and different from that of south of India, right? Just a second. Okay, now what they do after that, once the product is channelized, then they go for selling the product. They define a price range. Okay, they identify channels of scale, as in they channelize where they want to sell their product. Okay, online, offline, where, which store, which area, which geographical location, and then they accordingly price their products. Okay, they accordingly price their products and then they sell their products. Okay, that's how they work. Can you understand the entire flowchart? Did you understand? Yes, ma'am. Everyone has understood? Please take a note of all this. I'm giving you 5 minutes. Please take a note of the process. मैम एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं आप? हाँ बोलो. मैम जैसे ये कुछ ब्रांड है जैसे किले केल्विन है, और वो अपनी पैंट्स वगैरह यानी काफी हाई कॉस्ट पे सेल करते हैं, 40,000 50,000 रुपए की. तो मैम जैसे हम यूज करते हैं उनका काफी अच्छा मतलब प्रोडक्ट भी रहता है. क्या मैम इनका मैन्युफैक्चरिंग और इनकी कॉस्ट इतनी हाई रहती है, या फिर ये सिर्फ एक हाइप बनाने के लिए इतना ज्यादा प्राइस रखते हैं? आप कौन से ब्रांड की बात कर रहे हो? टेल मी द ब्रांड नेम. किले केल्विन मैम. क्या क्या? केल्विन केल्विन की मैम पैंट्स आती है ना जींस वगैरह की. कैल्विन क्लेन. यस मैम. You're talking about Calvin Klein, right? नहीं, वो 40-50 हजार में जीन्स नहीं बेचता. 15,000 20,000 उसका प्राइस नहीं जितने में ही रहता है. नहीं मैम, Right? मैंने देखा है 1.5 लाख रुपए की भी है मैम. ऐसी बात नहीं है, मैंने काफी विजिट किए हैं शोरूम, और उनका 10,000 से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की भी मैंने जींस देखी है. It is not a premium brand, okay? तो 1.5 लाख 2 लाख का वो डीजल वगैरह का होगा. Calvin Klein never sells a pant which costs you more because उनका brand value ही वैसा नहीं है. ठीक है? मैम मैं ये पूछ रहा कि उनकी इतनी कॉस्ट आती है, या फिर जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है? No. The thing is, actually, Calvin Klein जो ब्रांड है, ठीक है, वो यूएस का ब्रांड है. ठीक है, it is a US Yes, brand, ma'am. right? And what they do is they sell their product because of the brand value. They have established the brand. Okay, when they're selling a brand, the brand sells not just product, the brand sells the value associated with it. So when you wear a Calvin Klein jeans, is not just a product. अब बाहर जाते हो तो आपको फिर लोग देखते हैं कि ओ सीके का जीन्स पहना है, ओ सीके का टी शर्ट पहना है. So people perceive you that कि हाँ अगर ये सीके वीके पहन रहा है मतलब he has lot of money. That's the general human perception that people carry. Okay,
डेफिनेटली दे मेक प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उनका मटेरियल प्रीमियम होता है, सब कुछ प्रीमियम होता है, बट देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग is very different from that of the cost of selling, the cost that the consumer pay. The products get manufactured in export houses, and then it is sold in the market. Maybe it could be like a 300% markup, 400% मार्कअप के साथ वो लोग बेचते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है. सो यस मैम. या सो द प्रोडक्ट एंड द प्राइस रेंज वो बहुत चेंज होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो यू नो इतना ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख का है. नो, इट्स नॉट दैट, बट द प्राइस रेंज वैरीज. मैक्सिमम 30,000 तक वो जाता है, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है. यस मैम. ओके. और जैसे ये लेदर ब्रांड है, जैसे हाई डिजाइन से जैसे बैग है, ये इनका भी क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में काफी डिफरेंस रहता है, या सिर्फ डेफिनेटली ये भी ब्रांड की हाइप रहता है? ब्रांड वैल्यू के हिसाब से वो चेंज होता है, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से चलता है. आप हाई डिजाइन का ब्रांड, वो हाई डिजाइन भी नहीं, दैट इज हाइट साइन. हाइट मीन स्किन. Okay, so the brand, first of all, the brand is height sign. It's not high design. It's height sign, and it makes premium luxury leather products. Okay, आपको एक मैं लोकल लेदर प्रोडक्ट दूंगी और आपको एक हाइट साइन का प्रोडक्ट दूंगी. There's a difference. आपको हाइट साइन का ज्यादा अच्छा लगेगा इसलिए क्योंकि उसका प्रीमियम पैकेजिंग होगा, वो बहुत नीट होगा, उसमें से स्मेल कुछ नहीं आ रहा होगा, वो बहुत प्रीमियमली स्टोर्ड किया हुआ होगा, उसको बहुत प्रीमियमली ट्रीट किया गया होगा. होने के बावजूद भी वो एक ब्रांड वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है वो प्रोडक्ट. तो डेफिनेटली तुम्हारा लाइकिंगनेस वो ब्रांड के तरफ ज्यादा जाएगा दैन द लोकल प्रोडक्ट. Because local market is not that organized, brands are more organized. उनका जो product pricing और जो costing है, that is very different. Understood? यस तो मैम. वो difference हमेशा रहेगा. ठीक है. यस मैम. मैम एक क्वेश्चन और था मैम, यदि इसी इंडस्ट्री में मैम यदि किसी को स्टार्टअप वगैरह डालना हो तो मैम वहां से मैं कहाँ से नॉलेज गैदर करनी चाहिए? जैसे हम ये सर्टिफिकेट कोर्स तो कर रहे हैं, बाकी कोई आप सजेस्ट कीजिए, कोई बुक्स वगैरह या कोई ऐसा कोई कोर्स प्रेफर कीजिए जिससे हम इसके बारे में ज्यादा जान सके और इस इंडस्ट्री में मतलब स्टार्टअप यानी बिजनेस कर सके मैम. क्या आप देखो, गाइड कर सकते हैं मैम? अगर आपको करना ही है, you can go for internships in the export houses. Okay, now that you will be getting a degree with this certificate program, you can go and gain some exposure in the export houses. समझो पहले काम होता कैसे है. Then if you want to read books, then study books of fashion merchandising. Okay, ये फैशन मर्चेंडाइजिंग के बुक्स आप देख सकते हो जिसमें कि ये सारे प्रोसेसेस के बारे में समझाया गया है, फैशन बिजनेस के बारे में बताया गया है, फैशन इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है. ठीक है. जी मैम. ठीक है. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. आप पढ़ो, फिर देन यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू मैम. ओके. ओके.
Fine. Okay. Now let's study about the. We understood the process of how it works and how it delivers and how the industry operates. Okay. Now we would like to understand that what is the impact that we are generating. Okay, what is the impact that we are generating by persistently purchasing products, and how are we working, you know, towards sustainability? How are we planning to save our planet? How are we working on other aspects, right? Okay. Now we have economic impact, social impact, cultural impact, and environmental impact. Okay. Now फैशन इंडस्ट्री आपको पता है कि बहुत इम्पैक्ट आपके लोगों के ऊपर भी है. आप देख रहे हो फैशन इन्फ्लुएंसर्स ये और डिजाइनर्स ब्रांड्स वो लोग क्या करते हैं. वो लोग क्या करते हैं कि दे वेयर समथिंग, दे पोस्ट अ पिक्चर. आज के डेट में एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, राइट? सो व्हेन दे पोस्ट अ पिक्चर, it shows in your Instagram or Facebook or something or the other. Now what happens is, once they show you all of that, you get influenced by those products. So that's how they work, right? So इन्फ्लुएंसर्स क्या है आज के डेट में, ये इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं. आप लोग खुद भी बहुत अपडेटेड हो. आपको भी पता है कि अच्छा ये शर्ट ट्रेंडिंग है, ये शर्ट ऐसा है, ये ड्रेस इसने यहाँ पहना था, ये रेड रेड कार्पेट में उसने ये पहना था, मेट गाला में ये पहना था. ना यू नो, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर हैंडी. एवरीथिंग इज इन द टिप ऑफ योर फोन, राइट? सो the cultural dimensions, the social, economical, and environmental dimensions are also shaping people lives. They're also shaping and influencing people lives. Okay, economic impact, social impact, cultural impact, environmental impact. ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, supply chain, innovation and entrepreneurship. Now, the fashion industry is a major employer worldwide, providing jobs for millions of people across various sectors, including design, manufacturing, retail, marketing, and distribution. From skilled artisans and garment workers to fashion designers and marketing professionals, and industry supports diverse livelihoods and contributes to economic growth and development. Okay. Trade and commerce, fashion is a multi-billion dollar global industry with countries engaging in the production, trade, and consumption of fashion goods and services. Fashion hubs like Paris, Milan, New York, London drive economic activity through fashion weeks, trade shows, retail events, attracting tourists, buyers, and investors from around the world. Supply chain. The fashion industry supplies span multiple countries and continents with raw material sourced from one region. Production facilitates located in another and finished product distributed globally. This interconnected supply chain contributes to global trade and investment flows, fostering economic interdependence and collaboration among nations, right? Innovation and entrepreneurship. Fashion thrives on creativity, innovation, and entrepreneurship, with designers and brands constantly pushing the boundaries of style, technology, and sustainability. From luxury fashion houses to independent designers and startups, the industry fosters a culture of innovation and experimentation, economic driving economic dynamism and competitiveness. अब ये सोचो
कि फैशन इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. Now, textile is the second largest contributor, GDP contributor towards this country. Okay, तो सोचो वो कितने लोगों, कितने ब्रांड्स हैं, ठीक है, कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कितने डिजाइनर्स हैं, सोचो कितने लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, कितने लोग. सो इट इज जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ट्रेड में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स. सो आप देखते हो फैशन हर जगह है. ओके, इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, तो इंडिया में बाहर से ब्रांड्स आके इंडिया में प्रोडक्शन करवा के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर लॉस को माना जाता है, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो, ठीक है. तो फैशन गुड्स और सर्विसेज फिर एक्सचेंज भी होता है, बिकॉज व्हेन पीपल इन्वेस्ट मनी हियर, so any which ways our country is growing, and at the same time we get to we observe fashion trends which are coming and going, right? Supply chain, जैसे कि आप इंडिया में प्रोडक्शन किए लेकिन ब्रांड है यूएस का, और यूएस में जाके वो स्टोर्स में वो प्रोडक्ट लगा, तो सप्लाई चेन में जैसे मैंने आपको कहा था, डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, तो वैसे ही ब्रांड्स ने इंडिया में प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया, यहाँ पे प्रोडक्शन बना, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हुआ, और उसके बाद वो फिर लेके गए वहां और उसको हाई प्राइस में उसको बेच दिया, तो मुनाफा ब्रांड का हुआ, करेक्ट. बट देन हमें क्या हुआ, हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ हमारा, क्योंकि प्रोडक्शन यहीं पे हुआ, हमारे लोग एंगेज हुए, उनको एक रोजगार मिली, करेक्ट. एंड देन हमारा कंट्री और कंट्री का जो रिलेशन है वो भी अच्छा होता जाता है. इट contributes to global trade and investments. Okay, so a country becomes interdependent on each other. Okay, innovation and entrepreneurship, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री थ्राइव्स ऑन क्रिएटिविटी, तो इनोवेशन के बिना दिस इंडस्ट्री वोंट सर्वाइव, right? So you have to have everything new, all the new things in your plate, otherwise you are out of the game. If you want to sustain in the fashion industry, you have to be very very on point with what is coming, what is going, which brand is doing what, and how are they operating, what are the new things that they have launched. So you have to be you have to be on your toes, right? Yes, ma'am. Social impact. Now when you wear some, beautiful garments, you think that you are shaping yourself, you feel very confident, right? So identity and expression, तो आपका जैसा पर्सनालिटी है, आपका जो पर्सनालिटी है, आप उस हिसाब से कपड़े चूज करते हो, पहनते हो, करेक्ट, right? So fashion plays a very very vital role in shaping individual and collective identities. It allows people to express themselves. You express yourself through your clothing, through your style, right? It also communicates about the social status, values, and aspirations through your style and clothing. It is basically a language where you express yourself without even uttering a word, right? Without even uttering a word. The way you wear your garments, the way you style yourself speaks a lot about you, right? Speaks a lot about you. आप देखते हो ना कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, देर ऑलवेज ऑन ब्लेजर्स एंड फॉर्मल्स, तो उनका एक अलग पर्सनालिटी, उनका एक अलग चार्म है. व्हेन वी सी देम वी थिंक दैट क्योंकि ये कंपनी की कोई सीईओ होगी या फिर कोई सीनियर एचआर होगी, कोई कॉर्पोरेट से है ना, बहुत पढ़ी लिखी होंगी, बहुत उनको नॉलेज होगा. वी विजुअलाइज देम दैट वे, ठीक है. So through their clothing we guess that okay, this could be her personality or this could be his personality, right?
Yes, ma'am. Social mobility, and then labor rights and working conditions, right? हम किस तरीके का सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहे हैं, बट वी नीड टू सी दैट where are we making correct things or not, are we doing right things or not, are we following the proper labor rights, labor laws or not. We shouldn't be forcing any child labor, we shouldn't be asking people for unfair wages, they should have a very safe working condition, because they are humans too. The one who is making your clothes has every right to have a peaceful life, has every right to have a good working condition, right? The way you work in a corporate, you expect that okay, these are the things my company should have, right? Likewise, when a worker is working on your behalf, you should be careful about the brand that you're picking, whether they follow all of these rules or not, whether they are following fair wages or not, whether they are following proper working conditions or not. These are very very crucial. हम ब्रांड से तो कुछ भी उठा के पहन लेते हैं, बट वी हैव टू बी, नाउ इट इज हाई टाइम, वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स. हमें सिर्फ सस्ता मिल रहा है करके हम अगर उठा के ले आएंगे, देन वी आर नॉट कंसर्न फॉर दिस प्लैनेट, नॉट कंसर्न फॉर द पीपल. आपको सस्ते के साथ ये भी देखना है कि मैं जहां से उठा रही हूं या उठा रहा हूं ये प्रोडक्ट बना कहाँ है, किसने बनाया है, उसको वो किस कंडीशन में काम कर रहा है. हम कम पैसा दे रहे करके उसको सफर तो नहीं हो रहा वो. वी शुड सेंसिटाइज पीपल. भले ही आप दो जोड़ी कपड़ा रखो, बट इट शुड बी एथिकली सोर्स्ड, it should be ethically sourced. Are you following me? Yes, ma'am. Why only one student is saying yes, ma'am? What No, about others? following you. Okay. Cultural impact. Now, cultural impact, when there is exchange of commodities, when there is exchange of product, so cultural hybridization होगा, right? Globalization होगा तो फिर you will get to see more Western products in India, some Indian products in West, right? So that's how the trends will spread, the styles will spread, the aesthetic across borders will spread, right? आजकल तो सब कुछ डिजिटल मीडिया, फोन, सब इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? तो कल्चरल डाइवर्सिटी को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, राइट? Cultural appropriation. Now, what is this? This is very important. Please understand this. Cultural appropriation is something wherein, suppose आप एक जगह को बिलोंग करते हो, ठीक है? उनका एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वो ऐसे ही वो पर्टिकुलर चीज को करते हैं, ठीक है? कोई ब्रांड आया, उस चीज को उठा के अपने ब्रांड के नाम पे बना के बेच दिया. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, जैसे कि बिहार का सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है? दैट इज अ वेरी लोकल क्राफ्ट एंड अ वेरी ब्यूटिफुल क्राफ्ट, राइट? What they do is they hand embroider the social cause. The women in Sujni craft, they hand embroidered the pieces, and it is always related to any social cause. Okay,
So what if a brand comes and copies those design and then sell it on their own name, saying that "Ki, okay, this is a new craft that we have, emerged into, and this is how we are doing." So people will appreciate it, but it is called cultural appropriation, where elements of one culture are adopted without proper acknowledgement or respect to their cultural significance. That means that the brand has not given due credit to the people from where they have learned the craft or they have copied the design. They must give due credit to the people from where they have learned or sourced their product. It might have been made in their factories, but the idea, the thought from where it got generated has to be given credit. Let's say I am a craft based brand, so what I'll do is I'll see कि okay सृजनी का ये बहुत अच्छा क्राफ्ट है, इसको लेके मैं अपने ब्रांड के नाम पे उसको बेच दूंगी, काम करवा के फिर बेचूंगी. अगर मैं सुजनी क्राफ्ट के बारे में पीपल को अवेयर नहीं कर रही हूँ और सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में ही बना के प्रोडक्ट बेच रही हूँ, डू यू थिंक दैट इज एथिकल? No, ma'am. It's not. So it is very important to understand what are we paying for. Is it worth it or not? Right? We need to know the value of our products. Why are we paying this price? So it's very important that you sensitize yourself with all of these aspects. You sensitize people about those aspects. जो इंसान बेचारा, जो गरीब इंसान जो एम्ब्रॉयडरी करके जितना थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है, आप अपने ब्रांड में उस चीज को कॉपी करके 5,000 10,000 हैंडमेड के नाम पे बेच रहे हो और उनको कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हो, तो फिर उनका तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ. आपका ब्रांड का प्रमोशन हुआ, लेकिन आपने उनसे सीखा. मतलब आपने कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया ना. उन बेचारों का क्या हुआ फिर? सो दैट इज नॉट राइट. That is absolutely unethical. It's a very, very unethical practice. Right? So you need to highlight the importance of cultural sensitivity, giving due credit to the artisans or the community or the culture from where you have drawn in your inspiration. Sustainability and cultural heritage. Okay. Now, fashion sustainability efforts often intersect with cultural heritage and preservation, as designers and brands seek to incorporate traditional craftsmanship, artisanal techniques, and indigenous materials into their collections. By promoting sustainable fashion practices and supporting local artisans and communities, the industry can contribute to the preservation and celebration of cultural heritage around the world. Like a lot of the designers and you know ब्रांड्स आर वर्किंग. बहुत सारे लोग अभी अपने लोकल क्राफ्ट को लेके बहुत ब्रांड्स बनाए हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं. राइट? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ऑब्वियसली इतना लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो होगा ही. फर्स्ट थिंग इज पोल्यूशन. Obviously, we are polluting it. Lots and lots, gallons and gallons of waters are used. Right? डाइंग में यूज होता है, फिनिशिंग में पानी वेस्ट होता है, कितने केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज होते हैं. So we are polluting the environment. Are we doing anything for the environment? Do you think we have the right to pollute the environment? Are we planting trees? No. Then we have no right to contaminate river, lakes, and oceans.
Do you agree with me? Yes, ma'am. Ma'am. So we cannot take things for granted, which is why you can see the fate today. कैसे icebergs melt हो रहे हैं अंटार्कटिका में because of our unconscious attitude towards this planet. Water levels are increasing, icebergs are melting. आप देखो आज के डेट में कितनी गर्मी हो रही है, ईयर ऑन ईयर द टेम्परेचर इज राइजिंग, राइट. रिसोर्स डिप्लीशन, आप नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिप्लीट कर रहे हो. वेस्ट जनरेशन, आप कपड़ा जब नहीं पहनते हो तो कितना वेस्ट करते हो, कुछ दिनों के बाद आप बोलते हो कि अरे यार इससे मन उब गया. ठीक है, तो वो लैंडफिल में जाके उतरता है. गिव मी 2 minutes. By then you study the slide.
Okay, now you guys can see there is chemical pollution, carbon footprint that we are emitting. Okay, by because fashion production involves a lot of energy intensive processes, so that rely heavily on fossil fuels, right? So, which is why the rise of fast fashion and globalized supply chain has led to increased transportation emissions from the movement of goods across long distances. So, which is why carbon footprint, we are releasing a lot of carbon footprint. We are generating a lot of carbon footprint uh, because of our, you know, um, choices, preferences that we have undertook. Okay, microplastic pollutions, because once the garments are dumped into the landfill, okay, it is thrown away in lakes, rivers. Okay, so there's a lot of issue that generates, and it leads to microplastic pollution. Okay, now next is, overall, the fashion industry's environmental impact is significant and multifaceted, encompassing pollution, resource depletion, waste generation, chemical contamination, carbon emissions, and microplastics pollution. Okay. Addressing these environmental challenges require collective action and systemic changes across the fashion supply chain, including the adoption of sustainable practices, circular economy models, and innovative technologies to minimize environmental harm and promote a more regenerative and equitable fashion industry. In summary, the fashion industry's global impact extends beyond aesthetics and commerce to encompass broader economical, social, and cultural dimensions, shaping identities, livelihood, and societies in profound ways. As the industry continues to evolve, addressing its social and environmental challenges while embracing innovation and inclusivity will be crucial for creating a more equitable, sustainable, and culturally rich fashion ecosystem, right? So, like I said, we have to be very, very sensitive towards what we are doing, and accordingly we can sensitize people about the practices that we are adopting. What garments are we choosing? What brand are we choosing? What material are we choosing? When we are using something which is synthetic, let's say polyester, it is completely a man-made fiber. Polyester is not a good fabric. It harms the environment, it harms the planet. Have you ever thought what is the aftermath after those garments are discarded from your wardrobe? Where does it land? अब कभी आपने खुद को पूछा है कि जो कपड़ा हम फेंक देते हैं वो जाता कहाँ है? Have you ever asked yourself? Please answer me. I have no idea. No, ma'am, not really. Yeah, so you have to be very, very conscious about, like, not just you, lot of people do not know the answer, where does it goes, because we have fallen into a pattern wherein we just see ourselves, we don't think about others, we don't really think about others. What are they doing, how it is to be done, what is the aftermath, who all are there to look after the pollution that we have created by far. Who is responsible for all of this? We are responsible. So now it's high time we have to be very, very conscious about what we are doing, what garment are we choosing, what brands are we choosing. We should always promote handloom because it is labor intensive. The artisans of our country are making it, who are a marginalized community in this country.
Handloom involves zero chemical footprints. It releases zero carbon footprints. Everything is manually done. Sorry. It is not fed by industry. We should shift our vision, our goal. There has to be a paradigm shift. Then only we can think of revolutionizing, bringing some kind of a revolution in this world. We need one person to change, and then following that person, other people will follow. How many handlooms do you know? Can you tell me? Tazkia, you are from which place? Ma'am, I'm from Kashmir. You're from Kashmir. Yes. Okay. And Vinita, you are from which place? मैम गुजरात। Okay. मैम Dharm, स्वदेशी क्या है? मैम स्वदेशी ब्रांड भी हैंडलूम ही है ना, जिसपे खादी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। हाँ. Dhamvir, you are from which place? मैम दिल्ली से हूँ मैम। दिल्ली से हो आप? हाँ, तो आपको तो फिर बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस वहीं पे आसपास है, गुड़गांव में, नोएडा में, ओखला में, हर जगह है एक्सपोर्ट हाउसेस. You can go and intern there. You can work. First, you learn ओके the मैम। trade, and then probably you can land up, being an entrepreneur. You can start your own company. मैम मेरा एनजीओ भी है एक, तो ट्रेनिंग सेंटर टाइप का मुझे डालना था, तो इसीलिए कर रहा हूँ। और दूसरा इसमें इस फील्ड में मुझे स्टार्टअप भी करना था। ये दोनों काम करने हैं। हाँ, तो आप पहले एक्सपीरियंस तो ले लो, नहीं तो कंपनी को चलाओगे हाँ कैसे? मैम, मुझे एक चीज और पूछना है मैम। जैसे हम एक्सपोर्ट हाउस जाएंगे तो मैम किसी वहां पर किससे बात करें, या फिर कोई कंपनी We'll से come to किसी that. से बात करें? We are discussing something else now. We'll come to that. Now it's not the right time to discuss all this, right? ओके मैम। We will come to that. Okay. We were talking about handlooms. Yes, Ritu, you are from which place? बिहार मैम। Bihar. Rupa, you are from which place? वेस्ट बंगाल कोलकाता। Okay. Now, can all of you tell me what are the handlooms and handicrafts or hand embroideries that you know from your places? We can start from Rupa. रूपा, आप बता सकते हो आपका वहां का लोकल हैंडलूम और हैंड एम्ब्रॉयडरी क्या फेमस है? ऐसे कि मेरा जो है एसएचजी ग्रुप वाला है ना, एसएचजी ग्रुप नहीं, हैंडलूम्स क्या फेमस है, मैं वो पूछ रही हूँ. हैंडलूम है, जो आर्टिसन है उसमें मिलता है। क्या मिलता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द क्राफ्ट? नेम ऑफ द क्राफ्ट हाँ, एम्ब्रॉयडरी और अनदर थिंग इज व्हाट सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी? हैंड कोलकाता में क्या एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी फेमस है? हैंड एम्ब्रॉयडरी है और बुटीक पेंटिंग भी है। क्या क्या? बुटीक हाँ, बुटीक क्या है? बुटीक बुटीक पेंटिंग, पेंटिंग जो है ना कपड़ा में जो पेंटिंग होता है। नहीं नहीं, मैं पेंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ. मैं आपसे बोल रही हूँ कि कोलकाता में ट्रेडिशनल हैंडलूम्स और हैंड एम्ब्रॉयडरीज क्या क्या फेमस हैं? तो मुझे पता नहीं है ठीक से। आपके वहां तात फेमस नहीं है? कांथा फेमस नहीं है? तांत, हाँ तांत फेमस है। वो तो हाँ. कपड़ा में काम होता है। वो बुटीक पेंटिंग भी यहाँ पर फेमस है। नहीं 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 नहीं, हैंडलूम नहीं है ना वो. मैं हैंडलूम ओह, और हैंड अच्छा एम्ब्रॉयडरीज की बात कर रही हूँ. अच्छा 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 अच्छा। कांथा फेमस है कोलकाता में. इट इज, यू हैव कांथा एम्ब्रॉयडरी, okay, which has got a GI tag as well, geographical indication. यस यस। Then you have this thing, तात साड़ी, जामदानी, ढाकाई जामदानी, then baluchori. हाँ These are हाँ the famous handlooms that we have हाँ। in Bengal. यस यस। बालूचोरी इज द फेमस, बालूचोरी साड़ीज।
Ritu, you can tell me what are the famous crafts of your area? मैम यहाँ तो सिल्क और खादी फेमस है, इसका कारोबार भी होता है। मधुबनी पेंटिंग नहीं होता? नो मैम, मधुबनी पेंटिंग का तो पता नहीं, पर भागलपुर में सिल्क का होता है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी है। Okay. Then you have Tazkia. What are the hand embroideries and handlooms and famous shawls of Kashmir? Yeah, we have Sozni work here. Hmm. We have Kashmiri Tilla, that is Hmm. hand embroidered work done. Hmm. We have Zardozi work is done here. But Zardozi is famous in UP. It's not a work of Kashmir, it's a work of UP. Yeah, but people People do it might be like, doing it. Yeah. People are doing it. Now there is, like, in the name of globalization, people have, exchanged crafts. yeah. But the origin is from UP. Yeah. Okay, and Ari work is there. Ari, and then Mm, yeah, that's it. And we have handlooms for shawl weaving, like pashmina, we tusha. Pashmina. Kani is there. Kani jamawars are made. Hmm. So yeah, that's it, I guess. Sozni embroidery is there. Yeah, Sozni. You have cruel work there, Yeah, cruel. Yeah, that's there. right? Cruel work is there. Then you have this you know uh, different shawls, Yeah, which is handmade, right? handmade shawls. Chatouche. Then this angora hair shawls, Yeah, yeah. right? Mainly Shatush is banned now. Shatush is banned now, Yeah, but Shatush was there. yeah, it was there. Yes. Hmm. And other crafts are also there, right? Okay, Vinita, can you please tell me? यस मैम। Batao. मैम पटोला बांधनी फेमस है वहाँ पे गुजरात साइड में। Hmm. और खादी खादी बांधनी पे फेमस नहीं है, बांधनी इज फ्रॉम राजस्थान, बंधेज इज फ्रॉम गुजरात। पर मैम बांधनी वहाँ पे भी लोग प्रेफर करते हैं वेयर करने नहीं के नहीं, लिए। प्रेफर करने की बात नहीं कर रही मैं। बांधनी एंड बंधेज आर सिमिलर, बट दे आर डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स, राइट? आई एम अ टेक्सटाइल faculty, like, I'm a professor at NIFT, so I teach textiles, so which is why I know the crafts across India and abroad. So बंधेज जो है, बंदेज। yeah, it's from there. Yeah. ओके मैम। और क्या है, विनीता? मैम हम्म और मैम नॉलेज नहीं है यार, इतनी। गुजरात में तो भरे हैं। हाँ मैम, पर नॉलेज नहीं है इतनी। तो तुम वहीं की होगे, तुम्हें कैसे नॉलेज नहीं है? सूरत इज द हब ऑफ टेक्सटाइल्स। यस मैम, ये तो पता है। फिर लेकिन वहां पे पावरलूम के कपड़े बनते हैं, बट देन हैंडलूम क्लस्टर्स तो भरा है गुजरात में। हम्म। ठीक है, ओके। who else is left? Is there anyone who is left? Okay, I guess we are done, right? Any doubts you have regarding this subject that we studied today? No, ma'am.
Okay, tomorrow we'll study about fashion cycle. But as of now, today, did you understand this? How does the industry operates? What are the mechanisms? Yes, ma'am. What are the different kinds of impact that it? Yes, ma'am. Hmm? Okay, okay. कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है? मैम एक चीज़ है। पूछो। मैम आपने बताया था जैसे कि जो भी हम ड्रेसेस बना रहे हैं, फैशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो प्रमोशन से 1 साल पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो वैसे मैम एक्सेसरीज़ की भी 1 साल ही मैंडेटरी है या फिर उससे कम टाइमिंग है? No, accessories is very much seasonal, but those are not garments, so it has a shorter turnaround time. It has a shorter Okay. turnaround time. It is not made 1 year ahead, but yes, the design preparation and everything is done 1 year ahead. The Okay, ma'am. design process is followed 1 year ahead. Thank you, ma'am. Yeah. Any other doubts? मैम एक कोई ईमेल आईडी मिल सकती है आपकी मैम, यदि कोई गाइडेंस के लिए आपको ईमेल कर सके? I can give you my email ID. I'll give you my email ID. Wait. Anything else? Shall we थैंक यू close? मैम। Yeah. Shall we close for today then? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, guys. Tomorrow I'll see you tomorrow then. Okay. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah.